Hello, good evening everyone. That's really nice. Hello, good evening everyone. That's really nice. So first I would like to introduce you myself, Abhijit Phansalkar. I have been in this CAT field for more than last 10 years. Yes, good evening everyone. Yes, Rigved, Arpita, Suvas. Good evening everyone. Yes, Rigved, Arpita, Suvas. Good evening everyone. So I have conducted more than many thousands of hours of CAT training sessions and have trained more than many thousands of students for CAT. Many of my students have scored more than 99 plus percentile and have secured admission in B school. Okay, now is it okay? Yes, it is. Is it okay now? I have reduced it. Okay, yeah. So, first, why to join Unacademy and how to join Unacademy. That now the procedure you must have gone through. Yeah, okay, thank you. So, first I would like to introduce you why you should go for CAT. Because you will find CAT is the exam which is on the top of the ladder of many exams. Yeah, good evening everyone. So many exams like SNAP, CET, ZAT, NMAT, GMAT, JRE, CMAT, even banks, LICs, all these exams simultaneously you can get prepared, and it is more than 90%. So once you prepare for CAT, it is like you are preparing for many like such exams. मीन्स ये तो एग्जाम्पल ऐसे हो गया कि यू आर एक्सपर्ट इन ड्राइविंग बुलेट और एनी मोटरसाइकिल, गियर्ड मोटरसाइकिल, and then you are given a scooty. That is how you can compare the CAT with other exams. So once you prepare for CAT, simultaneously all these exams you can definitely prepare. Only in some exams like say bank or SNAP, वहाँ थोड़ा GK का रेफरेंस आता है. Doesn't matter. वो GK आप जितना करोगे उतना, जितना पढ़ोगे उतना हमेशा कम ही होता है. But just the important part. Simultaneously, I would like to ask you to read the daily newspapers or at least the headlines. मीन्स वो हमारी पतली गली में क्या हो रहा है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट नेशनल, स्टेट वाइज, इंटरनेशनल वाइज क्या स्पेशल न्यूज है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए. नाउ रिसेंट द बिगेस्ट इवेंट हैज बीन ओवर. क्या था वो? Newspaper you have to read mainly English newspaper and business newspaper. Like Economic Times, Times of India, mainly you have to go through it. Many current events you should be aware of. Yeah, you can go for Economic Times also. Yes, good evening everyone. Okay, so that is how you have to prepare for CAT. Okay, again I will reduce it. I am trying to reduce it. कोई यहाँ दूसरा ये नॉइज नहीं आ रहा है. अभी देखो. नहीं, I have switched off the fan. Topic for today is Venn diagram.
Venn diagram. अभी देखो, now the voice is clear. Okay, yeah. So here, as usual, our promotion that has to be done. You must be aware of that. So for 1 year, it is going to be 17,500. For 2 years, it is going to be 21,000. And if you use my referral code ASP10, you will avail the 10% discount. So here 1750 will get reduced. So net you have to pay 15,750. Here अभी आ रहा है या नहीं? Is it clear now? Okay, I will speak louder. I will speak louder. Okay, now is it clear? Maybe power supply fan. Ekdam, yeah. Now I got it. A small noise is coming. Yeah, it is about power supply fan. Okay, so here 2100 will be reduced. So net we have to pay 18,900. The same figures have been displayed here. अब एक इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी देखो. इफ यू डिवाइड दिस बाय 365 पर डे योर एक्सपेंडिचर इज जस्ट 43 rupees, and here if you divide by 730 per day it is just 25 rupees. आई थिंक वो मेरे लैपटॉप का पावर सप्लाई का फैन शायद थोड़ा आवाज कर रहा है शायद, बट एटलीस्ट यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. For CAT 2020, okay. Now CAT 2020, as it is knocking on the door, so you have to apply this strategy. This is the most important strategy you have to go for. Okay, the strategy is like this. Nowadays, in all exams, percentile is taken care of, not the percentage. So it is percentile. Okay, shall I continue? Yeah. Okay. So, as you are aware, for every correct answer, you get 3 marks, and for every wrong answer, 1 mark is deducted. Right? So, in DILR, generally there are 32 questions. Now, this year, this number of questions will be reduced. Because already the disclosure is that they have reduced the timing from 3 hours to 2 hours, and for every section they have reduced the timing from 60 minutes to 40 minutes. So there is going to be reduction by 1/3. So proportionately number of questions will also get reduced. That is everybody is expecting. So apply the same strategy. Strategy should be the same. So in DILR, see, if a student scores 24 marks, then his percentile is 90. This is the data, authentic data for the last 3 years in DILR. So for which one has to solve only 8 questions with maximum accuracy. So 8 out of 32. आप देख सकते हो, it is easily manageable. The second slot is 35 is the score and 95 is the percentile. That is also manageable because for that one has to solve only 12 questions with maximum accuracy. Okay. And this is the most important slot. That is always my target to all students. So score of 46, the percentile is 99, and for that one has to solve only 16 questions with maximum accuracy. So 32 में से 16 आपको solve करना है, आराम से हो जाता है. Okay, so उसका जो bifurcation है 32 में से 16 on DI and 16 on LR. सो टोटल सेक्शन में हमें 16 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. सो वो आप किसी प्रकार आप एडजस्ट कर सकते हो. 10 LR के 8 DI के या 8 LR 8 DI
जो कॉम्बिनेशन आपको सुटेबल या कन्वीनियंट लगे एट दैट पॉइंट तो आप उसे फॉलो करना. ओके, सी टोटली या वहां मैंने बताया था. करेक्ट. आई हैड एक्सप्लेन्ड इट इन द मैराथन सेशन. ऑल ऑफ यू हैव अटेंडेड इट. Correct, absolutely correct. So today I will just brief out, because actually today's topic is also that we had covered. Okay, sure. Okay, then we will straight away go to Venn diagram. Okay, fine. Really good. So we will start with Venn diagram. Okay, so we'll directly start with the Venn diagram. Absolutely right. So Venn diagram, as you are aware, this was the method developed by a mathematician Venn. तो उसके ऑनर में वो नाम रखा है. So it is across two sections. एक आता है वर्ड प्रॉब्लम्स के फॉर्मेट में और एक आता है डिडक्शंस उसके फॉर्मेट में, या जिसे हम कहते हैं सिलोजिज्म. टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट वर्ड प्रॉब्लम्स, क्योंकि लास्ट 3 साल कैट में वेन डायग्राम और क्यूज पे क्वेश्चंस आए थे. ओके, सो वेन डायग्राम मीन्स यू आर गिवन सर्टन डेटा इन फॉर्मेट. से इन अ क्लास देर आर 100 स्टूडेंट्स, out of which 50 they drink tea and 70 they drink coffee. इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. And now this data is to be represented in the form of for both it is valid. Correct for both. And if you get the questions on Venn diagram in CAT 2020, please do attempt. Questions on Venn diagram. प्लीज डू अटेम्प्ट क्वेश्चंस ऑन वेन डायग्राम. वो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल सकते हैं, उतना डेफिनेट है. सो दिस इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ सर्कल्स. एक्चुअली it is supposed to be convenient with geometrical figure, but the most user friendly is circle. So here you will find this total comes out to be 120, but actual number of students is 100. So whatever is the difference, that is the common section. So there is intersection of two parameters. So it is represented like this. Say this is section of tea, this is section of coffee. Now its denomination is given like this: A, B. Common section generally it is given as G and N. N is none. Please remember, N is not 0. N stands for none. So here the basic equation is prepared as T is equal to sum of A, B, G, N. AB stands for exact 1. G stands for both, that is exact 2. So here are two parameters, tea and coffee. अब यहाँ देखिए डिफरेंस कैसा है. If it is A plus G is the section, it is for tea. तो उसकी टोटल आनी चाहिए 50.
Yes, yes, sure. So today I will give the theory part. Today it will be theory. Okay, and tomorrow we will have variety of problems. Yes, perfect. Nikita, what you have done is correct. A is 50 minus G, B is 70 minus G. Perfect. So A is a section, it is for only T. That only word is important. Similarly, B plus G is for coffee. And B stands for only coffee. This is the difference between just T and only T. Okay. Now here watch for one important statement such as each student drinks at least one type of drink. This is very important statement. So when this statement is there, please remember वहाँ n नहीं होगा. Okay, if this are you able to read it? Just see. Are you able to read it? Each student drinks at least one type of drink. Okay, this is the important statement. So when this statement is there, then n will not exist. Okay, then in that case this equation will become T is equal to sum of A, B and G. अब ये स्टेटमेंट अगर नहीं होगा तो डायग्राम में कैसा फर्क पड़ेगा वो भी देखते हैं. साइमल्टेनियसली यू कैन कंपेयर बोथ A, B, G and N. Now sometimes N is given directly. Okay, or if this statement is not there means you can analyze that N will exist. अब यहाँ देखिए, this you had pointed out correctly. ये जो difference है वो difference यहाँ आएगा. That means 20 students drink both the beverages, both tea and coffee. Now value of this A, as Nikita has pointed out correctly, it will be 30 and this will be 50. So this value will be 100. Please remember, वो जो total बनेगी वो total exact 100 होनी चाहिए. It should not exceed 100 or it should not be less than 100. वो exact 100 आनी चाहिए. Correct? Now see the difference. Now if it is given directly that n is 10, तो क्या होगा? Then here 100 minus 10, that will be 90, and now you have to compare this difference 120 and 90 means now the value of G will be 30, value of A will be 20, and then value of B will be 40. Sometimes value of n is given directly. Now you can compare the difference between the two. When n will exist and when n will not be there, the difference इस प्रकार हो जाएगा. Now this is called universal set. Universal set is total of all. So sometimes you will find this symbol T. Instead of that GT is also given, or something like mu is also given. So इनमें से कौन सा भी आने दो, the meaning is same. It is total, grand total या mu जो भी है. The symbols can be different. So now if here the question is how many students drink at least one type of drink, at least one. So here you will find two important words. One is at least and one is at most. At least का मतलब है it is greater than or equal to 1. That is exact 1 plus more than 1. More than 1 means in that case it will be exact 2. So here the section will be A, B and G. So in Venn diagram, please remember from the given data you first locate the section. ये सबसे इम्पोर्टेंट है. आपको जो भी वहाँ डेटा मिलेगा वहाँ से वो कौन सा सेक्टर है, कौन सा सेक्शन है, वो पहले आप फाइंड आउट करो. फिर वो प्लॉट करने में और इक्वेशंस तैयार करने में आसान हो जाता है. ओके,
So at least one means the section is A, B and G, but the most tricky part is at most one. At most one is like less than or equal to 1. So it is break even is exact 1 plus whatever is less than 1. तो इसमें ये n आता है, none. ये प्लीज ध्यान में रखना, ये कई बार ट्रिकी होता है, या तो कई बार वो कैलकुलेट करने में या इसमें भूल जाते हैं. So that happens to be a silly mistake. Yes, correct, absolutely correct. So it is sum of A, B, N. Perfect. और यू कैन से ए बी एन या तो टी माइनस जी, ये भी कर सकते हैं. यस श्योर आई विल एक्सप्लेन. श्योर. सो ये जो था, दिस वाज केस नंबर 1 मेन पैरामीटर स्टूडेंट्स, जिसमें टी और कॉफी पीने वाला मीन्स बेवरेजेस का ये कंसेप्ट था. इज इट क्लियर? Okay, so now we will move on to the second case. यार ये क्या चल रहा है? सॉरी. Okay, so this was case number 1. You can say something has happened. Okay, I will just clear it. Yeah, okay. So now we will have second case. अरे यार क्या हो रहा है? What is this? It is not getting erased. Surprising. Okay. कुछ ना कुछ होता रहता है. ये क्या हो रहा है? Yeah, sure. Okay, now the second case, it is given as further bifurcation होगा उसमें. बॉयज एंड गर्ल्स, ये एक bifurcation होगा स्टूडेंट्स में, एंड टोटल. से टी, कॉफी, बोथ, total.
समटाइम्स यू विल बी गिवन टेबल ओनली अप टू दिस लेवल. सो हियर नन का जो कॉलम होता है वो कई बार आपको नहीं मिलेगा. सो दैट यू हैव टू ऐड योर सेल्फ. नाउ सी स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट्स में अब डिवीजन हो गई बॉयज एंड गर्ल्स, और बेवरेजेस जो है उसमें भी डिवीजन हो गई टी और कॉफी. सो दिस इज कॉल्ड इवन डिस्ट्रीब्यूशन. इवन मीन्स दोनों में परफेक्ट सब डिविजन से. स्टूडेंट्स के अंदर 2 पैरामीटर्स, बेवरेजेस के अंदर 2 पैरामीटर्स. इफ दिस इज अनइवन, जैसे कि यहां और एक सपोज बेवरेजेस है, तो फिर वो यस हेलो कुणाल, वो वेन डायग्राम से नहीं होगा. देयर शुड बी इवन डिस्ट्रीब्यूशन. इवन डिस्ट्रीब्यूशन है तभी वो वेन डायग्राम से बन सकता है. ओके, सो दिस इज फॉर बॉयज टी एंड कॉफी, दिस इज फॉर गर्ल्स टी एंड कॉफी. अब ये कॉलम्स को अगर हम नंबर्स देते हैं तो इक्वेशन कैसे बनेगा ये भी देखते हैं. सपोज दीज आर कॉलम्स नंबर. एटलीस्ट 2 मीन्स आज थ्योरी पार्ट में डिस्कस कर रहा हूं, कल उसके प्रॉब्लम्स लेता हूं मैं. और अगर आप लोगों को और भी चाहिए तो और भी एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन वो फिर डिसाइड करेंगे हम कल. ओके, कोई नो प्रॉब्लम. कल हम जितना मैक्सिमम वैरायटी होगी उतने हम मैक्सिमम वैरायटी वाले प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे. ओके, सो हियर यू विल फाइंड ये है टी का सेक्शन और ये है कॉफी का सेक्शन. राइट, डिनोमिनेशन हमेशा ऐसे रहता है. इट इज ए बी जी एंड एन. जी इज फॉर कॉमन, मीन्स इट इज इंटरसेक्शन ऑफ जितने भी पैरामीटर्स होंगे, तो वो आसान होता है. सो अब इसका इक्वेशन बनता है टी दैट कंसिस्ट ऑफ ए प्लस जी प्लस कॉफी जो बनता है बी प्लस जी से, इज इक्वल टू टोटल बनती है ए बी जी एन से. सो नाउ वी हैव टू बैलेंस दिस. आर यू अवेयर ऑफ theory? ओके, मैं शॉर्ट में बताता हूं. श्योर. सो हियर ए बी इज बैलेंस्ड. जी यहां 2 बार है तो वो यहां आएगा जी 1 बार. सो इट विल बी बोथ. और ये जो एन है वो एन यहां आएगा. सो दैट विल बी नन. ओके, सो हियर ये इक्वेशन इस प्रकार. ओके, श्योर मैं शॉर्ट में ये कर देता हूं. ओके, आपने कर दिया है. ओके. तो फिर हम डायरेक्ट प्रॉब्लम्स की तरफ जाते हैं. व्हाट यू से, टेल मी, सो दैट वी कैन इमीडिएट स्विच ओवर टू प्रॉब्लम्स. कोई प्रॉब्लम नहीं. यू टेल मी. ओके, श्योर. तो प्रॉब्लम्स की तरफ. ओके, फाइन. प्रॉब्लम्स की तरफ जाते हैं. ओके, वेरी गुड.
Yeah, okay. So we will start with the problems. Okay. Okay, sure. Now see, we will start with some simpler problems. You can start solving. Read it carefully and go on. In a group of 200 people, 90 people can dance, 120 people can sing, and 10 of them neither sing nor dance. Yes, I have some collection of those problems. We will be discussing. Okay, all should be carried equally. Okay, so let us start with this. No, I have some difficult problems that also we will share. Okay, sure. Okay, let us see these problems first. So this is total. Yes, perfect. Very good, really good. So 200 means that is comprises of total sum of A, B, G, N, correct? 90 people can dance. Suppose ये है डांस का सेक्शन, ये है सिंगिंग का सेक्शन. So dance means this total is A plus G. This sing means this is B plus G. 10 of them neither sing, so N is 10. Okay, so here this equation will become A plus B plus G is 190. Now A plus G is 90, so B होगा 100. Then B plus G is 120, so A होगा 70. And then G will be 20. Correct है, perfect. ना एक्चुअली उस समय वो लेते समय वो बोल्ड में रखा था, वो रह गया. Okay, just forget it. Main concept is important, so just forget it. I will remove that. So this is for cricket, this is for hockey. So again, in a school of 200 students, so total is sum of A, B, G, N. Hundred play cricket, so it is A plus G. 50 play both, that is G, so G की वैल्यू है 50. A plus G is 100 means A will be 50. हाँ, अब यहाँ का स्टेटमेंट देखिए, 125 do not play hockey. अब ये हॉकी के अंदर जो है B plus G they play hockey, तो इसका मतलब है it is A plus N. So ये जो वैल्यू है it is for A plus N. Many times you get the statements in negative tone.
Correct? Many times you get the, yes. So n is 75, correct? Correct. A plus n, so n will be 75, perfect. So B will be now 25. A option is 125, just see. नहीं, now it is at most one. At most one means कौन सा section होगा? At most one is less than or equal to one. That is exact one plus none. ये मत भूलना. Exact one आता है a plus b plus n. Or it is t minus g. Yes, correct. Correct. So it is 150, perfect है. Okay, now you give me the answers. Okay, I will explain again. Okay, see, now it is asked for at most one game. How many students play? At most one. At most one is less than or equal to one. That is exact one plus less than one. Less than one, that is none. Means we have to find out the sector covering exact one and none. अब वो sector कौन सा है? तो it is A, B and N. Now is it clear? Okay, fine. Okay, so now the next is, okay, can you try? Yes, मीना कुमारी, ऋग्वेद, टिल्टी. अरे बहुत फैंसी नेम्स है आप लोगों की. रियली अप्रिशिएबल. मीन्स रियल नेम क्या है? Okay, so can you try for this? Vaidehi, or good name. So first there are two parameters. Okay, take your own time. नहीं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स. कैलकुलेशंस परफेक्ट होनी चाहिए. कैलकुलेशंस आपके हाथ में होते हैं, कंसेप्ट्स आपके हाथ में नहीं होते. कंसेप्ट्स रियलाइज होने. क्वेश्चन नंबर 4 नॉट विजिबल. ओके, देख लो. $28, yes, 28 is the correct answer.
Correct, 28 is correct. So there are two parameters. Total is 150, 110 passed in physics. So this is for physics, this is for chemistry. Let it be A, B, G and N. So this total T is sum of A, B, G, N, which is 150. 110 physics means this is A plus B. Chemistry means it is B plus G. 61 passed in both, so this is G. So ये होगा 61. This will be 12. This will be 49. So just calculation carefully कर लो. So N is 28. Correct. So it is option A. Okay, next. Now in the next example, some data is in percentage format and some data is in actuals. Okay, दो अलग अलग लेवल पे है. So उससे आपको बैलेंस करना है. Which one? कौन सा कैलकुलेशन? See, 61 passed in both the subjects, so it is G. Chemistry की total B plus G is 73, so B will be 12. And 110 is sum of A plus G, so A is 49. और सब मिला के total है 150. So just balance N will be 28. फोर वाला लो. Okay, okay. Now in a colony 50% families have car. So car का एक पैरामीटर है, टू व्हीलर का एक पैरामीटर है. So it is A, B, G and N. Okay. Now here the total का जो पहला basic, yeah, correct. तो वो इक्वेशन इस प्रकार बनता है. टोटल इज सम ऑफ ए बी जी एन इज टेकन एज 100%. So 50% families have car means it is sum of A plus G. 75 families have only two wheelers means B की वैल्यू एक्चुअल है 75. हेलो मनोज सर, 4 सेट वेन डायग्राम वाला नहीं आता है सर. ओके, वो भी दैट ऑल्सो विल डिस्कस. Then 25% families do not have any vehicle, so N is 25. A plus G and 40% have both. So G की जो वैल्यू है it is 40%. So A will be 10%. So ये सब मिला के टोटल कितना हो गया? Yes मनोज, हेलो. So if you calculate here 10, 50 plus 25 means B जो है B की वैल्यू आपको मिलेगी 25%. So now you get a direct proportion equation. 25% is 75 means 1% is 3. So it is option C.
सी 50% हैव कार, कार का सेक्शन है A plus G, so A plus G is 50%. 75 families have only two wheelers, so that is the actual value. 25% do not have any vehicles, so N is 25%. And 40 families have both the vehicles, so G is 40%. Basic equation you have to connect in this manner. Sum of all variables should be equal to 100%. Is it clear? Rugved? Some values are in percentage format and one value is in actuals. Okay, good. So they have asked how many families are there in the colony. So it is 100%. 100% means 300. Okay, shall we move on? अरे क्यों ट्रायल एरर क्यों किया? नहीं, इट इज सिंपल कैलकुलेशंस. तुक्का मत लगाना. Okay, now see next. ओके, टेक योर ओन टाइम, केयरफुली करना, कैलकुलेशंस गलत मत जाने देना. सी कई बार क्या होता है, कंसेप्ट समझ में आने को थोड़ा सा दिक्कत होती है, बट कैलकुलेशंस आर अंडर योर कंट्रोल, सो प्लीज बी केयरफुल. ओके, ठीक है, श्योर. So they have given class of 150 students, 40 passed in social studies, 90 passed in science. So social studies and science, दो पैरामीटर्स है. Again variables will be A, B, G, N. 30 failed in both, so ये N will be 30. लेकिन वैसा मत करो, सिंपल कैलकुलेशंस है, मैनेजेबल है, तो कैलकुलेशंस कर दो. ओके, वहां से भी हो सकता है, लेकिन उतना समय फिर वहां नहीं मिलेगा आपको. यू हैव टू क्रैक सच एक्सरसाइजेस इन जस्ट 1 minute, सो कैलकुलेशंस फटाफट हो जाते हैं. नहीं, तुक्का नहीं बोल रहा हूं मैं. वो होता है, ऑप्शन से भी ट्राई करने से होता है, लेकिन कैलकुलेशंस करो ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाता है. यस, करो. सो पहले ये टोटल T इज इक्वल टू सम ऑफ ABGN, ये पहला इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन. 40 passed in social studies, that is A plus G. 90 passed in science, so it is B plus G. 30 failed, that is N. So N की वैल्यू अगर आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी तो you get ABG as 120. करेक्ट है, फर्स्ट इज करेक्ट. A plus G की वैल्यू 40 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी तो B मिलेगा 80.
b प्लस जी की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दी 90, तो a मिलेगा 30 एंड नो यू विल गेट g as 10. करेक्ट है, करेक्ट, परफेक्ट. दूसरे का 80, करेक्ट, करेक्ट, परफेक्ट. एटमोस्ट वन, अब यहां देखिए फिर से क्वेश्चन है एटमोस्ट वन, दैट इज लेस देन और इक्वल टू 1, एग्जैक्ट 1 प्लस नन. सो अगेन द सेक्शन इज ABN और टोटल माइनस G, सो इट इज 140, करेक्ट. अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है. दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड इन साइंस बट फेल्ड इन सोशल स्टडीज. सबसे पहले पास्ड इन साइंस मीन्स वो इसके अंदर होना चाहिए. सबसे पहले दिस इज द सेक्शन दैट द नंबर ऑफ ओके बताता हूं इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड इन साइंस एंड एट द सेम टाइम फेल्ड इन सोशल स्टडीज. सो यहां देखिए ये स्टूडेंट्स है पास्ड इन साइंस, तो फेल्ड इन साइंस हो गए A प्लस N. हियर दिस इज द सेक्शन द स्टूडेंट्स हैव पास्ड इन सोशल स्टडीज, दिस इज द सेक्शन हु हैव फेल्ड इन सोशल स्टडीज. सो अब हमारा टारगेट मीन्स कौन सा सेक्शन बनता है. पास्ड इन साइंस मीन्स वो इसके अंदर होना चाहिए एंड फेल्ड इन सोशल स्टडीज मीन्स इसके बाहर. सो हियर द सेक्शन इज B, इट्स वैल्यू इज 80. आंसर 1 इज 140, करेक्ट, करेक्ट. तीसरा क्वेश्चन, उसकी लैंग्वेज देखो, वो थोड़ी सी ट्रिकी है. व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन साइंस फेल्ड इन बोथ. एक्चुअली वहां क्या होता है, ऑप्शन से थोड़ा इसका अंदाजा आएगा. मीन्स हमें ऐसा लगता है दोज हु हैव पास्ड इन साइंस उनकी कंपैरिजन हमें फेल्ड इन बोथ से करनी है, लेकिन वैसा नहीं है. एक्चुअली यू जस्ट यहां एक कॉमा दो. सो क्या आता है, व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन साइंस इज फेल्ड इन बोथ, ऐसा उसे एक्चुअली एज्यूम किया जाता है. सो फेल्ड इन बोथ दैट इज N एंड पास्ड इन साइंस इज B plus G. So it is 30 by 90, that is 1/3, that is 33.33. ये थोड़ा सा ट्रिकी है. ये थोड़ा उनकी लैंग्वेज जो होती है ना कैट की, वो स्पेशल होती है, दैट इज द ट्विस्टेड. सो ये आपका उसे एज्यूम करके लेना है कि व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन साइंस कॉमा इज फेल्ड इन बोथ. मीन्स साइंस में जो पास हुए उनका कितना परसेंट है फेल्ड इन बोथ. करेक्ट, 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 करेक्ट. करेक्ट है, परफेक्ट है. परफेक्ट. ये अगर आपने देखा या कहीं आपको YouTube पे मेरा एक वीडियो अगर है तो वो आपको देखने को मिलेगा, तो आप देख सकते हो. ये 1/2, 1/3, 1/4 अप टू 1/16 वहां मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. ओके, सो समटाइम्स यू हैव टू कन्वर्ट दोज परसेंटेजेस इनटू फ्रैक्शंस. अगर आपको पॉसिबल है तो वीडियो आप जरूर देख लेना. अगेन some data is in percentage format, some data is in actuals. Correct, correct. Percentage into fraction wala, yes. So again, two-wheeler and four-wheeler. Some data is in percentage, some data is in actuals. फिर उसे कनेक्ट करना है.
So first you have to find out 1% is equivalent to how much. One percent means how much, वो निकालना है. So you have two wheelers, four wheelers. Denomination हमेशा वही रहेगा, A, B and G and N. Okay, take your time. Again, this word is important, only. So in a colony, 65% of residents have two wheelers, means ये सेक्शन कौन सा होगा, तो इट विल बी A plus G. 45% have four wheelers, means it will be B plus G. 20% do not have any vehicle, so that is going to be N. And the first equation, T is equal to A, B, G, N is equal to 100%. ट्वेंटी % अगर यहाँ से हटा दिया तो ये इक्वेशन बन जाएगा सम ऑफ ए बी जी इज 80%. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, परफेक्ट परफेक्ट. Perfect. Yes, absolutely correct. So B plus G is 45, तो इसका मतलब हुआ A will be 35%. A plus G is 65, means B will be 15%. 50-20 means ये हो गया 30%. And now they have given 70 have only two wheelers. So ये, so वहाँ आपको क्या मिला, 35% is 70, means 1% is 2. Perfect, perfect. So that gives you 100% as 200. Perfect, very good. अरे तुम्हारी कैलकुलेशंस, that is correct. 1% is 2. Perfect, perfect. Yes, 200 is correct. Perfect. Really good, really good. So पहला आंसर तो बन गया. It is 200. Exactly one vehicle. ये कितना हुआ? Question number 2. Exact one. Yes, perfect, perfect. Third is 40. मस्त.
do not have any vehicle, that is n. Exact one, that is a plus b. So it is 40. Perfect. Perfect. No, both is 30%. 30%. G is coming out to be 30. Yes, correct. 200 का 20%. Correct. नहीं, आंसर ऑप्शंस आपको मिलेंगे ए बी बी. नहीं, बहुत सारे ऑप्शंस नहीं. कुछ लोगों ने डायरेक्ट आंसर्स दिए तो उनको भी मैंने करेक्ट कहा. Really nice discussions with all of you, and all of you have participated and all of you have done very nice. Really appreciable. अरे जरूर जरूर. So now we will meet with some difficult problems. With some difficult problems tomorrow. Okay. Okay. So we will conclude. Okay, thank you very much. IPL में अब उतना मजा नहीं रहा. Yes, correct. Yes, sure. मैं वो ऑप्शंस ये कर देता हूँ. करेक्ट. ओके. IPL मीन्स पहले जो मजा आता था वो अब उतना नहीं लग रहा है. बट स्टिल favorite is let us say Mumbai. Mumbai. Okay, sure.
अब भी लाता हूँ, श्योर अब भी लाता हूँ. यस, इमीडिएट लाता हूँ.